forgot. And students, ये 4:30 का इतना लेट क्यों करते हो तुम लोग? मुझे ये और आज सुबह का 10:30 का क्या हो गया था? So we had lectures from 12 and other lectures also. Okay, but 3:30 is not comfortable for you all. So 3:30 is the best time. This 4:30 is too late. Yeah, that is it's too late, ना? That is what it is. लेकिन ये सब याना ने बोला 4:30 को, है ना याना? नहीं सर, मैंने नहीं बताया उन्हें कि 4:30 का। अरे ये Shona told only, she only told. Sir, Yana only has said it. Sardo was consistently saying it at 3:30. Yana only, your friend only said it, Yana. No. नहीं, I know she is not. Okay, fine. Vidhi Parmar, Vidhi, are you there in the sessions, Vidhi? Because I don't think so you're there into the lectures, Vidhi. Okay, the mic is not at all. Okay. There were certain students in the last lecture who went off. Swati, Yes, sir. Adarshini. Why is this in the last lecture? For last half an hour, you all were not there at all in the lectures. Isha. Yes, I want to know that. If you want to be into the session, students, you can be. Otherwise, you can leave right now also. Doesn't matter. It's not a hard and fast rule that is you have to. Okay, can I erase the students? इसको erase कर दूं मैं? Okay, students, ये तुम्हारा था to find out the center of mass for a triangular lamina, students. Whether it's isosceles or whether it's an equilateral, we can consider. So it's a centroid. Okay, students. Now, in case if I happen to go for a semicircular ring, students, what exactly is center of mass for a semicircular ring? 4r by 3 pi. 2r by pi. Semicircular ring मैंने बोला 2r by pi, and for semicircular disc of uniform thickness 4r by 3 pi. 4r by 3 pi. If I ask you what's the center of mass for a solid hemisphere of radius r? 3r by 8. 3r by 8. And if I ask you for a hollow hemisphere, then your answer will be r by 2. R by 2. Please, those students who don't know, kindly put it down. For consider as hemispherical shell, not solid, hemispherical shell of radius capital R, center of mass is r by 2, and for a solid hemispherical shell we consider as the center of mass is 3r by 8, where r is the radius, students. Okay, can you tell me what is the center of mass for a hollow right circular cone of height h? Center of mass for a right circular cone of height h, and it's a hollow cone. मैंने दो cones दिए, students. I'm giving you two cones. So at a height of h by 3 from the base. Absolutely correct. It's in form of a triangle itself only I can consider. And if I give you a solid cone, At this the is height hollow. of h by 4 From the base. And students, some students must have learned this in your 10th standard itself only. Center of gravity के हिसाब से. यानी अगर तुमने देखा होगा तो this part is there in your fourth chapter. If you are an ICSE student, you'll come across. अगर मैं hollow cone लेता हूँ, students. Okay, both are these for cones, and this is for solid cone. Solid cone के अंदर क्या होगा, students? There will be entire matter. And students, where is the mass more distributed? It's at the bottom. So students, जहाँ पे mass का distribution ज़्यादा होगा ना, students, वहाँ पे center of mass will get shifted. And students, यहाँ पे mass ज़्यादा distribution है नीचे की तरफ, students. तो center of mass यहाँ पे होगा.
लेकिन इसके लिए सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर हो सकता है क्योंकि ये हॉलो है. If I take this as the height of the cone, then the center of mass for a hollow cone, it is at a height of h by 3 from the base. और इसके लिए it's at a height of h by 4. Is this clear? This is the height of the cone. Students, क्या ये clear हुआ? Yeah. Okay. Also to keep in mind, students, अगर मैंने triangular lamina plate लिया, students, if I give you a right angle triangle, we consider it. Okay. It's not an equilateral triangle or not even an isosceles triangle. Okay. Not even a 45, 45, 90. It's a scale-in triangle, students. If in case if I give you a right angle triangle with one side to be P and the other one to be Q, students, then in that case, where exactly the center of mass will be, students, your XCM and YCM for such a triangular lamina, students. For such a triangular lamina, students, will be at a height of P by 3, comma, Q by 3. It will be at P by 3, comma, Q by 3, students. Okay, so now if in case if I say P by 3 will be somewhere over here, I'll consider. Okay, over here this will be Q by 3, so somewhere over here will be the center of mass. Okay, so P by 3, comma, Q by 3, students. Do keep in mind for triangular lamina, students, but a scale-in triangle, okay? Not an equilateral triangle, not an isosceles triangle also, but it's a scale-in right angle triangle. Are these three clear to all of you all? Yes. Why am I giving you all these things, students? At times to remember it for your MCQs or straightforward questions when they ask, you should not lose marks for it, students. For that reason, I'm giving it to you, students. Okay, now in the last lecture, I asked you for a hemispherical plate, students, of uniform thickness, center of mass. So, Ani, Yes, sir. I tried it, but I'm not getting like you're not getting it? it. Semicircular disc, I can consider radius capital R, 4 upon 4R by 3 pi. Anybody who has got it or who wants to try it out, students? Center of mass for a hemispherical, students, plate of uniform thickness, radius capital R, students. Why can't you go on to your instinct, students? Everybody can solve it, students. If in case if you're thoda sa wise ho jata, students, you can get the answer easily. Anybody who has tried it out or wants to try it out? Sanjana, what about you? Have you done, Sanjana? Sir, I have also tried, but I didn't got an answer. Okay, Janani, Parthvi, what about you? No answers from them. See, Parthvi has gone into a shell. मुझे ऐसा feel हो रहा है. I don't know what has happened to her. She was bubbling with lots of energy initially, but now she has gone into a shell. पता नहीं क्या हो गया. No, she'll text. She'll text. She won't unmute herself now. Sir. Soumya, what about you? You don't answer. Tisha and Swati are the two students which they will be attending the lectures for first 1 hour, and then next 1 hour they won't be there into the lectures along with Adarshini. Kathy, what about you? Yana, what about you? Did you all try it out? Yes, sir, but I did not get the answer. Okay. Okay, fine. Students, let me give you the hint about it. Okay, how to go about it. Students, तुम्हें semicircular ring के बारे में पता है? Ring के बारे में पता है अभी? Students? The ring. Do you remember for the ring? Yes, sir. Ring के लिए क्या था, students? अगर तुम्हारा, see, how did you go about? We went for lambda because it was simply length of a wire which was bent in form of a semicircle. And this was your point O, which is center of the ring. And this is your x coordinate. Sorry, this is the x axis and this is the vertical y axis. So यहाँ पे हमने location कहाँ पे दिया center of mass? Center of mass was along y. Its x coordinate was 0. There was no mass distributed along the x axis. The mass was distributed all the way along the y axis we considered. यानी तुम देखोगे तो उसका center of mass यहाँ पे है, students. यानी ये YCM के हिसाब से center of mass. तभी जाके तुम्हें इसका आंसर क्या मिला था, स्टूडेंट्स? For semicircular we consider as 2 capital R by pi.
You'll get the students. Radius is capital R. इसके लिए हम लोग ने कैसे समझा था स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है? तो मैंने क्या किया था, मैंने एक छोटा सा इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट ले लिया था, है ना, कुछ याद आ रहा है, जिसको मैंने dx ले लिया था। एंगल d थीटा बहुत ही छोटा था। ये अगर मैं इमेजिनरी एक एंगल ले लूं थीटा स्टूडेंट्स, तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इस पोजीशन वेक्टर के मैंने दो कंपोनेंट्स ले लिए थे, एक rx और ry, और फिर मैंने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, dm में सब्स्टिट्यूट किया था, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स, इट्स लैम्डा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, mass per unit length, and length was pi capital R for the entire. What about the element part? Element part के लिए क्या था सर, ये dm, लेंथ क्या था dx। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? लेकिन मुझे dx नहीं पता था, मुझे d थीटा बचा था। व्हाट इज थीटा? सो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो हमने dx को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, r into d थीटा, और फिर हम इंटीग्रेशन पे चले गए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें xcm तो 0 मिल रहा था, हमें ycom चाहिए था। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, y into dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, है ना? Yes, sir. और फिर हमने क्या किया था इन दैट केस, YCM के लिए y into dm, तो हमने dm का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया था। और ये जो YCM है, I get it, that we wrote it in terms of what exactly it's YCM, ये r cos R sin theta था, theta. और ये R r sin theta. theta, that was your YCM, that भी सब्स्टिट्यूट हो गई। और फिर हमने सॉल्व किया था। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये रिंग के बारे में? Yes. अभी now we go for plate. Vidhi Paul, are you there, Vidhi Paul? Vidhi, you entered it right now. Where were you in the last lectures? Vidhi Paul, where were you in the last lectures? Are your parents aware about it, that you're not attending lectures? Secondly, if you attend the lectures also, you leave the lectures as fast as possible. Are your mom and dad aware about these things? Or shall I call them up right now? Vidhi Paul, which branch are you into? See, no reply. It seems she's from Mira Road, if I'm not mistaken. So there is one within Mirror, but I'm not sure which one. Yeah, Vidhi Parmar, now she replied, she has texted. Vidhi Paul, you were not there in the previous lecture. Is that clear? You attended and then you left. You left after that. And I need to speak to your parents regarding this. तुम्हारे लिए it's not good, students. It's not good for you all. I have nothing to do with it. Attend करना हो करो, नहीं करना तो मत करो, तुम्हारी मर्जी. Okay, students, so let us go for semicircular plate, students. Okay, center of mass for of uniform thickness, radius r, students. Okay, now let us go for this. Now when I speak about for the students, I'll go for a semicircular disc we consider, but it's a plate we take it. Okay, now when I say semicircular plate, that means this is entirely filled up with matter. Center is O, radius capital R. Now students, please pay attention. अगर मुझे center of mass इसका चाहिए, तो of course I can look at the center of mass. Students, you can look at the center of mass.
लेकिन ये जो प्लेट है स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है कि ये प्लेट बना कैसे है. सेंटर ऑफ मास फॉर अ सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड इट्स अ रिजिड बॉडी. स्टूडेंट्स, अगर मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें प्लेट बनाना है तो तुम कैसे बनाओगे? और स्टूडेंट्स, हाउ डू यू मेक प्लेट इन दैट केस? Students, so listen carefully. A semicircular plate is made up of thin uniform rings. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. ये एक रिंग, ये दूसरा रिंग, ये तीसरा. मीन्स if in case if I say rather than ring I can consider as thin uniform wire. यानी एक वायर अगर मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई वायर लेता हूँ तो उसका थिकनेस इज नेग्लिजिबल. ये देखो, दिस इज अ वायर स्टूडेंट्स, इट्स अ थिन यूनिफॉर्म वायर. Thickness is negligible. Let us say the thickness is very small, dx. Agreed? Its thickness is x. Dx we consider. Its mass is what? It's dm. Yani like this, please pay attention. Like this, I'm taking n number of strips. So ध्यान से सुना, मैंने n number of strips लिया है. कहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं? सेंटर से शुरू कर रहा हूँ. और फिर मैं क्या करूँगा? ध्यान से देखना. ये स्ट्रिप को मैं बेंड कर रहा हूँ. बेंड कर रहा हूँ. बेंड कर दिया मैंने. बेंड कर दिया. कुछ समझ में आ रहा है? इसको फिर मैंने बेंड कर दिया. स्टूडेंट्स, यानी अगर कोई मैं स्ट्रिप लेता हूं और इस स्ट्रिप को मैं बेंड करता हूं, फ्रॉम सेंटर से मैंने शुरू किया, पहला स्ट्रिप, दूसरा स्ट्रिप, तीसरा स्ट्रिप, चौथा स्ट्रिप, पांचवा. सी द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स. प्लीज पे अटेंशन. लुक एट द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स. आई एम बेंडिंग ऑल दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप्स एंड इफ आई जॉइन देम और कीप देम इंटैक्ट, व्हाट एम आई गेटिंग इट? आई एम गेटिंग अ प्लेट. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू? एक सिंगल Yes, थिन sir. यूनिफॉर्म वायर लिया या थिन यूनिफॉर्म स्ट्रिप लिया स्टूडेंट्स, ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, और मैंने कहां से शुरू किया? सेंटर से शुरू किया है. और उसको फिर मैं रोल करके उसके पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, रोल करके पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, रोल करके पीछे की तरफ. तो हुआ क्या? अरे हाँ यार, ये तो पूरा डिस्क बन गया. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें 5 रुपी कॉइन, स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली 5 रुपी कॉइन? 5 रुपी कॉइन इज अ सॉलिड डिस्क, है ना? अगर Yes. मुझे ये चलो, मुझे Yes, वो sir. सॉलिड डिस्क चाहिए, मुझे सॉलिड डिस्क बनाना, तो कैसे बनाओगे? सोचो ना, 5 रुपी कॉइन का ऊपर का एक सरफेस ले लो, ये कर्व पार्ट है. लेट मी टेक इट इन दिस सेमी सर्कुलर. ये पूरा एक कर्व पार्ट है स्टूडेंट्स, ये पूरा एक कर्व पार्ट मैंने ले लिया. चलो, 5 रुपी कॉइन का एक एक स्ट्रिप ले लिया मैंने. यानी एक्चुअली स्ट्रिप को, अगर मैं स्ट्रिप को ये काट के सीधा करूंगा तो कहने से इट इज द स्ट्रेट वायर. इसी को मैंने रोल ऑन कर दिया ना. यानी मैं सेंटर से शुरू करूं, एंड इफ आई हैपन टू गो अराउंड अराउंड अराउंड, इफ आई गो ऑन कीपिंग इट अराउंड, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट इट? आई एम गोइंग टू गेट अ circular disc, and that also a solid one. So to go ahead with your semicircular plate, students, we need to consider that this particular plate is made up of n number of infinitesimal strips या string, infinitesimal wires, जिसका thickness dx है, जिसका mass dm है. ऐसा एक सच स्ट्रिप मैं यहां पे बता रहा हूं. यही स्ट्रिप मेरा यहां पे है. क्या ये क्लियर हुआ सबको? अभी देखो, ये एक स्ट्रिप मैंने लगा दिया. वैसे ही मैं यहां से शुरू करूंगा तो पहला वाला स्ट्रिप ये होगा, फिर दूसरा वाला स्ट्रिप, तीसरा, चौथा, पांचवा, लाइक दैट आई कैन गेट एन एंटायर सेमी सर्कुलर रिजिड बॉडी. Students, is this much clear to all of you? First, Yes. only one student is speaking about it. What about the rest of them? Are you Yes. getting it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ये क्या है तुम्हारा स्टूडेंट्स? दिस वी कंसिडर इज इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट स्ट्रिप और वायर आई कैन कंसिडर. ओके, जिसका थिकनेस बहुत ही छोटा है, डीएम. व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप? दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप इज एट अ डिस्टेंस x from the center. Now when I say students, look over here. Now when I say that if this is a strip which you are trying to go for it, students, अगर ये तुम्हारा स्ट्रिप है, everybody listen carefully.
ये स्ट्रिप था, ये स्ट्रिप है, ओके, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस x है. Can I consider my strip to be only a strip? Can I say my strip is considered to be semi-circular ring, infinite small element strip, or a wire, or semicircular ring, or a wire? Can I Yes. consider that? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहा था स्टूडेंट्स, कुछ पता है? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहा था? 2r इसका by सेंटर, pi. हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहा था? What's the center of mass for a semicircular ring, students? फॉर्मूला क्या था हमारा? 2r by pi. 2r by pi. लेकिन r की जगह पे ये क्या है? x. तो कहने से दिस इज 2x by pi और ये है ycm. xcm तो 0 है. ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये Yes. पार्ट मैंने क्या यहीं से निकाल के यहाँ पे बता दिया है बस. सिर्फ ये पार्ट को मैंने निकाल के बताया तो एक सिंगल वायर है, ये पूरा हॉलो अंदर. स्टूडेंट्स दिस पार्ट इज एंटायरली हॉलो. एक सिंपल स्ट्रिप ले लिया मैंने, तो उसका YCM क्या होगा? 2x by pi because the distance is x. Now when you look at it, look at this particular thickness. So this thickness is dx. ये thickness क्या है? So this thickness is dx. This thickness is dx. Yes sir. ये thickness क्या है? dx है. What is the distance over here is x. Means what is the length of this particular strip? So the length of the strip it is in form of a semicircle. So can I say pi into x? Students? Yes. Students देखो ना, semicircle pi x. X is a radius. क्या इतना क्लियर हुआ? Yes. तो L is equal to pi x कैसा है? Haha. Is this a strip? Huh. Is this a wire? Am I bending it in form of a semicircle? Yes. What is the radius of this particular semicircle is? X. So what exactly the perimeter of this particular semicircle will be? Fine. 2 and pi x. Circle 2 pi r, semicircle pi r, तो pi x आ गया. क्या इतना क्लियर हुआ? Yes. प्लीज स्टूडेंट्स ये समझे बगैर तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो. अगर नाउ स्टूडेंट्स वर्क, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस डायग्राम एज इट इज. Whenever you try to see this diagram, you'll come across I'm taking slightly thin wires. Students, I'm taking thin wires, and those thin wires I'm taking it of different lengths. पहले सबसे छोटा लेंथ, फिर उससे बड़ा लेंथ, फिर उससे बड़ा लेंथ, 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 और सारे वायर्स को मैंने बेंड करके एक सेमी सर्कुलर लैमिना बना दिया. ये सारे वायर्स बेंड हो गए और एक थिक लैमिना हो गया. आई एम ट्राइंग टू टेक इट वेरी क्लोज. इट्स लाइक दैट. उसमें से मैंने ये एक ले लिया स्टूडेंट्स. ऐसे सोचो ना, ये एक रेड वाला मैं अंदर दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स. ये मैंने एक वायर लिया स्टूडेंट्स. ये सोचो ना, मैंने ये वाला वायर लिया. चलो, ये एक वाला वायर ले लिया, जिसका ये जो थिकनेस है वो dx है स्टूडेंट्स. उसका जो मास क्या है? dm है. उसका जो रेडियस है वो x है. उसका सेंटर ऑफ मास इस रिंग का क्या होगा? YCM होगा. और ऐसे मैंने n नंबर ऑफ वायर्स डाल दिया तो मुझे एक सेमी सर्कुलर लैमिना मिल गया. अभी क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. अभी आगे बढ़ूं मैं. Yes. Yes sir. Now once when you understand this students, now your proof becomes very easy. How to go about with the proof? So now you have to go for, should I go for linear mass density or should I go for surface mass density? They will say, sir, Surface mass. yes, we are trying to go for surface. तो सर ऐसा करते हैं ना, sigma is surface mass density aggregate, and that can be written as mass of the entire plate is capital M. Agreed? Mass we consider, and what exactly the area of this particular? So area अगर मैं लेता हूँ तो m upon pi r square by 2 होगा, क्योंकि रेडियस कैपिटल है ना. ये पूरा सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए. क्या ये क्लियर हुआ? ये एरिया है. Yes. So can I say this is 2 capital M upon pi r square? Agreed? Yes. Yes. Can I take it for an element? Yes, which is also equal to what? dm by dA, which is also equal to dm by dA. Therefore, can I write down the answer? देखना, sigma
is equal to 2 capital M upon pi r square, which is equal to dm upon ये जो है dm by dA किसके लिए? ये strip के लिए है. What exactly the area of the strip? Students, this is the strip. ये देखो, this is the strip part of it. ये जो तुम देख रहे हो ना, red ink, ये strip part है. This is the entire strip. Students, what exactly the strip part of it? What exactly the area of this particular strip? If I want to go for it, what exactly area of the strip? Sir, it's length into breadth. है ना? Length क्या है? So length है pi x. What is the breadth? dx. क्या ये clear हुआ area? Students? Yes. The strip is in form of a rectangle. Bend it. So area will be length into breadth. This is length and this is breadth. So pi x into dx. So pi x into dx. Once when you get there, students, what about we have to go for? Center of mass. Center of mass along x-axis is 0. Students, we're not going to go for center of mass. The center of mass with respect to x-axis we consider 0. We need to go for center of mass with respect to y-axis. And what exactly? It's integration of y into dm upon integration of dm. Now when I say about it, integration of dm into capital M, ये क्या है? YCM. YCM for the red part of the strip. Students, what about the red part of the strip? This is the red part of the strip. ये पूरा red part of the strip है. इसका YCM क्या है, students? What exactly YCM for this particular? So 2x by pi. Can I say this is 2x by pi? Agreed? Yes, sir. And what exactly dm? What is dm? Can I substitute dm as this? Into 2 capital M pi x into dx upon pi r square. क्या ये clear हुआ, students? Is this clear, students? Yes. Hope you all are able to get it, students. Yana, are you understanding, Yana? Khyati, what about you, Khyati? Yes, sir. Okay, fine. Sanjana, Shivani. Yes, sir. ध्यान से वापस में देख रहा स्टूडेंट्स, ये देखो 2x upon pi और dm को मैंने ये ले लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके. Now can I say YCOM for the disk, semicircular disk. क्या होगा यहाँ पे? कैंसिलेशन है. हाँ सर, एक पाई कैंसिल हो जाएगा सर. ये 2 2s I'll consider will be 4. I'm getting it, so I'm keeping it 4 outside. सर एक पाई बाहर आ जाएगा. ये कैपिटल आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा. ये m तो है, वो बाहर लिखूंगा मैं. इंटीग्रेशन ऑफ m वो एक बाहर आ जाएगा. Integration of x into dx. Now what are the limits? 0 to capital R, because मैंने स्ट्रिप्स कहाँ से शुरू किया? मैंने कहाँ पे शुरू किया? स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रिप बनाना शुरू किया, प्लीज पे अटेंशन. इंटीग्रेशन में लिमिट्स कैसे सिलेक्ट करते हैं? छोटा सा स्ट्रिप मैंने 0 से सेंटर से शुरू किया, फिर वो स्ट्रिप को मैं अलाइन करते गया. मैं स्ट्रिप को अलाइन करते गया. कहाँ से? फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to R. So my limits will be equal to what? Is this clear? Yes. Yes, sir. ये लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. हाउ टू सिलेक्ट द लिमिट्स? सो यू शुड से जब मैंने स्ट्रिप सेंटर से शुरू कर दिया एंड आई एम टेकिंग इट ऑन ईदर साइड, सो 0 to R I can consider. Now this part is the integration of x into dx we consider. Do we have any cancellation? हाँ सर, ये cancel हो जाएगा. Agreed. Solving it further, what exactly it will be, sir? It's 4 upon pi into R square. What is integration of x into dx? X square by 2. X square by 2. Sorry, one more x is there. Students, very sorry. ये और एक x है. ये x, ये भी x है. यानी ये x square है students अंदर. Please. Okay, integration of x square into dx क्या होगा? X cube by 3. Agreed. See students, there is one more x over here and x over here. ये x students यहाँ पे आ जाएगा. Agreed. And YCM का 2x already is there.
Now substituting it from 0 to r, so what exactly will be 4 upon pi r square into r cube by 3. This will get cancelled. What is my answer? Four r upon 3 pi. क्या ये clear हुआ students? Is this clear students? Yes. So for a semicircular disk, students, your center of mass we consider is only along y-axis, and for semicircular disk, it's 4r upon 3 pi. Students, I gave you for thin uniform rod, I gave you for thin uniform ring, I gave you for thin uniform disk also. I told you for different geometrical shapes. Do keep in mind about isosceles triangular lamina, equilateral triangular lamina, or a right angle scalene triangle. Okay, P and Q are the sides we consider. So P by 3, Q by 3 we consider for a hollow cone, for a solid cone, for a hemispherical shell, for a solid hemispherical shell. All these things the student should keep in mind. Okay. Can I erase this? For 1 minute. South, are you getting it? South? समझ में आ रहा है South? South? Yes. Are you sure, South? If I ask you questions, will you be able to answer? Yes, sir. I will. Okay, fine. What about you, Om? Today Shreyash is not there. Om, are you able to get it? Okay. What about Naina? Naina is attending for the first time or what? A new girl? Naina, have you been attending lectures, Naina? See, she's out. जैसे मैंने नैना का नाम लिया तुरंत she is out. This is a problem and the parents are not bothered. Okay. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students? Yes. Okay. Now students will be going for center of mass for two-dimensional objects. So you were calling me? Yeah. Why you were not there, Naina? Sir, I was there. I'm having network issue. Now is it okay? Okay, because yesterday also last lecture also you were absent. Sir, I was traveling. I was at my native place. I came to Mumbai. Fine. Life is full of care, no time to stand and stare. Okay, students, let's go for center of mass for two-dimensional objects, students. Again, now we go for COM for two-dimensional objects. Okay. Now see, अगर मैं two-dimensional objects लेता हूँ तो simply I can go for laminar objects, students. तो laminar objects के लिए students हम जो center of mass find out करते हैं ना students, it can be with respect to area, students, or with respect to mass. Okay, I can go with respect to area or I can go with respect to mass. Okay, for example, अगर मैंने कोई भी एक students अगर मैंने कोई laminar object दिया, okay, if I happen to go for irregular laminar, students, okay, but it's a solid one. This is a solid one. Now अगर मुझे इसका center of mass locate करना है, okay, center of mass, if in case if I want to locate it in that case,
So let us assume this is my axis, students. Let me take this as X, Y, and Z. Agreed. Now, this particular two-dimensional object or laminar object, let us consider that this particular laminar object is consisting of particles which are distributed either in discrete or in continuous manner. सिर्फ ये ध्यान में रखना students, discrete होगा तो algebraic sum होगा. अगर particles, ध्यान से सुनना, अगर particles are distributed in discrete manner, so all of you all should know it, okay? All of you all should know it, that it will be algebraic sum of mi, I equal to 1 to I equal to n, that will be equal to capital N, okay? But if it is in continuous manner, then in that case, integration of dm will be equal to capital N. This is what you have to simply keep in mind, bas, that's all. लेकिन यहाँ पे अगर मुझे suppose location of center of mass मुझे locate करना है students, so how exactly your RCM, center of mass, I'll locate it in terms of, with respect to area I can consider students. यानी with respect to area अगर मैं लेता हूँ तो it will be A1 R1 plus A2 R2 plus it will go on AN RN. That means area of the part we consider. That means it is distributed with respect to the area part of it. Upon what exactly I can consider? A1 plus A2 plus goes on with AN. Means can I say your RCM is nothing but algebraic sum of AI, Ri, I equal to 1 to I equal to N upon algebraic sum of AI. यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अगर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिया लैमिनार ऑब्जेक्ट तो मैं किसके हिसाब से गया? आई एम गोइंग विद रिस्पेक्ट टू एरिया. कैन आई गो विद रिस्पेक्ट टू मास आल्सो? व्हाई नॉट? आई कैन लोकेट द सेंटर ऑफ मास फॉर द बॉडी. तो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास के हिसाब से जाऊँ स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली आई कैन कंसीडर सेंटर ऑफ मास? अगर मैं मास के हिसाब जाऊंगा व्हाट एग्जैक्टली गेट इट विल बी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn आ जाएगा. यानी इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू मास. और यहाँ पे क्या होगा? algebraic sum of mi, I equal to 1 to I equal to n. Students, are these two parts clear to all of you? Yes. You can locate Yes, center of mass with respect to surface area. You can locate center of mass with respect to the distribution of mass. अगर यहाँ पे students, अगर मैंने बोला RCM is the position of the center of mass, यानी it's actually what with respect to three coordinates x, y and z. तो उसके लिए क्या होगा सर? XCOM होगा, YCOM होगा, ZCM होगा. Can you find out XCOM, YCOM and ZCOM? किसके लिए? For a laminar object. For a laminar object, students, can you find out XCOM, YCOM and ZCOM for laminar object? Why not? XCOM क्या होगा? Sir, XCOM होगा algebraic sum. ध्यान से देखना students. It's AI XI होगा. ये AI आ रहा है ना? AI XI होगा students. Hope you get this thing very clearly. When I equal to the first particle to I equal to n particle, the whole divided by what? Whole divided by what? Sir, algebraic sum of AI, I equal to 1 to I equal to n. Any students, we are trying to find out the center of mass. The answer is center of mass of a rigid laminar object. Two-dimensional object. XY, we can consider in this case. ये तुम्हारा Z axis is the plane of revolution I can consider. Okay, sorry, y axis is the plane we consider perpendicular to it. लेकिन तुम्हारा जो laminar है वो कहाँ पे distribute किया है सर? X axis और Z axis पे distribute किया हुआ है. तो ये two dimensional हो गया. Flat bodies, students, I'm speaking about flat objects. So जितने भी flat objects होंगे students, they are सारे two dimensional है students. तो उनका जो center of mass अगर locate करना है तो दो तरीके से possibility है. या तो तुम area के हिसाब से जाओ या तुम mass के हिसाब से जा सकते हो. एरिया के हिसाब से जाओगे तो तुम्हारा आरसीएम का फॉर्मूला जनरली होगा XCM, YCM, ZCM लोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? सेम थिंग आई कैन कंसीडर algebraic sum of AI, YI, I equal to 1 to I equal to n, the whole divided by area divided by algebraic sum of, sorry, for this one ZCM के लिए AI, ZI, I equal to 1 to I equal to n, the whole divided by a. And students, can I say I'm getting three different coordinates?
Yes, XCM, YCM, ZCM. Can I find out all three separately? Why not? और वो हो गया तुम्हारा RCOM. Is this clear, students, how to locate center of mass for two-dimensional objects? Yes, sir. Yes, sir. I'll be giving you certain problems onto the students, okay? You have to find out very properly to find out. अभी ये तुम्हारा मास्टर्स के हिसाब से स्टूडेंट्स. एक सिंपल क्वेश्चन में देगा स्टूडेंट्स. अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स. There are 4 blocks. Students, everybody listen carefully. ये x axis और ये y axis. अभी ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है स्टूडेंट्स. ये 4 ब्लॉक है. This is 0. This is 2 centimeter. This is also 2 centimeter. Each of 1 kilogram. Students, I want to find out the location of center of mass. तो कैसे करोगे तुम? I want to locate center of mass for such a lamina. क्या करोगे? It's a uniform mass distributed. Each of mass 1 kilogram. The mass Absolutely. is given, then we use the formula for mass. So But then X, can I take both these formulas and get the answer? yes. कैसे बताओ? Sir, for mass, we'll do XCOM is equal to sum of sum of M1 plus M1x1 plus M2x2 upon sum of all the masses. And for that area one, we can first find the area and then do the same thing. For Okay, XCOM also. Okay, the answer सुनना. Students, can I erase this part of the diagram? ये मैं diagram erase कर दूं? Yes, Students? sir. Yes, sir. Dance सुनना. Everybody dance सुनना, students. Okay. I'm just trying to erase this part of the diagram. Now please pay attention. इसी diagram को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ students. मैंने क्या दिया क्या students? I've given you 4 blocks. Each are of same mass. So जब भी तुम just go on to your instinct students. ये देखो. ये तुम्हारा horizontal x-axis, ये vertical y-axis और ये 4 ब्लॉक मैंने दे दिया. अभी मैंने थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दिया स्टूडेंट्स. हर एक का मास m है. अगर सपोज ये मैं मेरा फर्स्ट ब्लॉक लेता हूँ, ये मेरा सेकंड ब्लॉक ले रहा हूँ, मेरा थर्ड ब्लॉक ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरा फोर्थ ब्लॉक ले रहा हूँ, ये 0,0 है. सपोज अगर मैं मास के हिसाब से जाता हूँ स्टूडेंट्स, इफ आई हैपन टू गो फॉर मास, लेट मी गो फॉर द फर्स्ट मास. यानी मेरा फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स m1r1 m2r2. हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर? देयर आर 4 ब्लॉक्स. तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? m1r1 m2r2 m3r3 m4r4 अपॉन m1 plus m2 plus m3 plus m4. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? तो मैं आगे बढ़ू. Is this much clear for the 4? अभी देखो हर एक का मैंने मास क्या किया है सर? हर एक का मास यानी m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to m4 and that is equal to 1 kilogram. Agreed? लेकिन अगर तुम इंडिविजुअल, what is the side I've given to you? So side is 2 centimeter. यानी ये पूरा 2 centimeter है स्टूडेंट. ध्यान से देखो. तो ये कितना हुआ सर? ये हुआ 1 centimeter. Agreed? ये भी कितना है सर? ये भी पूरा 2 centimeters है. तो ये कितना हुआ सर? ये हुआ 1 centimeter. Now अगर मुझे R1 चाहिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना. तो from origin, can I say this is actually center of mass only for the first block? Yes, फर्स्ट sir. ब्लॉक. तो कहने से ये क्या दिखाता है? पोजीशन वेक्टर. कहने से ये दिखाएगा R1. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. उसका तुम x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बता सकते हो? हाँ स्टूडेंट्स. अरे हाँ सर, ये देखो ना, ये देखो ना R1. अरे हाँ सर, R1 का x1 y1 क्या होगा सर? x1 होगा 0.5. समझ में आ रहा है? देखो 0.5 पे आ रहा है. हाँ या ना? Yes, sir. Please everybody see over here. Is it 0.1, 0.5? What is y1? What is y1? 1.5. Sorry, 1.5. This is 1. Absolutely correct. 1.5.
स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है? Yes. प्लीज एवरीबॉडी लिसन, क्योंकि तुम R1 लिख रहे हो लेकिन तुम्हें R1 नहीं पता ना, ये x1 प्लेन, तो R1 क्या है तुम्हारा? x1 y1 I और j में, यानी स्टूडेंट्स तुम्हारा x1 कोऑर्डिनेट क्या होगा? तुम्हारे सर x1 is 0.5 I, कॉमा y1 1.5 j। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सेकंड का देखो, सेकंड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है ना, तो कैन आई फाइंड आउट R2? हाँ, इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या तुम बता सकते हो? अरे हाँ सर, इसका भी होगा 0.5 I और ये क्या होगा? कॉमा 0.5 j। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. x1 y1 x2 y2, वैसे इसके लिए होगा R3, ये होगा x3 y3, इसके लिए होगा R4 जो x4 y4 होगा। Can you find out xcum and ycum separately, or you can find out this? कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. What is xum? What is xum? What is xum? If I happen to consider, then what exactly answer will be? Sir, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 upon m1 plus m2 plus m3 plus वो xum हो गया, है या ना? Yes, sir. अरे please, if you are not able to, stop and ask me right now, because I don't want problems to go wrong. Because I could see hardly 3 or 4 students are responding, the rest of them are sitting mum, zipped. And then I have to speak out their names, and I have to again ask, as if this is something different. अगर नहीं आता तो please ask me, I'll again, मैं ये पूरा erase करके वापस I'll try to put forward. और ये तुम्हारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे जो XCM YCM यहाँ पे देखो एरिया की सब जाएगा, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? I'll consider will be m1 x1 plus m2 x2 plus m3, and the mass of each particle is known to you, 1 kilogram 1 kilogram 1 kilogram 1 kilogram. Can I find out the center of mass? RCM निकाल सकते हो स्टूडेंट्स? हाँ But स्टूडेंट्स, sir, why did we find out the center of mass of all the 4 blocks, and we did not do what we did previously? Like we can take that as 0,0 origin, the other like 2,0, and like that we can. Why didn't we take 4 coordinates like the that? reason is because it's a two-dimensional lamina, my dear. In the first case, when I took 0,0, there were discrete particles. Hello, Yana. See, Yana is raising a question. उस टाइम पे हम लोग ने कैसे किया? शायद यहाँ पे एक मास था, यहाँ पे अगर मैं मास दे दूं, यहाँ पे एक मास दे दूं, और यहाँ पे मास है ही नहीं, तो आई कैन कंसिडर, तो इसके तुम कोऑर्डिनेट्स क्या लेते थे? तुम इसके कोऑर्डिनेट्स 1,0 लेते, इसका 2,0 लेते, है ना? लेकिन वो डिस्क्रीट मैनर में, ये तो अभी पूरा ब्लॉक से मेरे है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, टू डायमेंशनल, इट्स अ लैमिना, इट्स अ प्लेट, so I need to go for the matter inside it also, or and looking at into it, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, सारों का मास है, वेर एक्जैक्टली माय सेंटर ऑफ मास शुड बी समवेयर। क्या आंसर आना चाहिए मेरा? 1,1. 1. सॉल्व इट, सॉल्व इट। So, sir, in this 2D object, the matter is placed in continuous manner. Yes, we do So- consider the matter as in the continuous, therefore we go for simply integration of dm. So now why are we doing that sum? The reason is why, because we have taken the entire mass to be concentrated at one point, so now this becomes my discrete particle. पूरा मास को मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया ना, यानी पूरा मास जो 1 किलोग्राम, अभी मैंने उसको एक पॉइंट में ले लिया है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो वो मेरा डिस्क्रीट हो गया कि नहीं हो गया? Sir, now so we are not considering the whole object. We are just considering the points. Yes. Each block I'm trying to go for a separate mass, and their mass is considered geometrical center. क्या Okay, ये sir. क्लियर हुआ? Yes. Everyone, Yes, Yana, is sir. it clear? Yes. Okay. Can I erase the students? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ मैं भी पूरा? Yes, sir. Yeah.
Now we try to go for students to find out center of mass. Okay, we'll try to go for center of mass, students, for a laminar object only. Lekin if some mass is removed or some area is removed from the rigid body. So if in case if I happen to give you for a rigid lamina, if some mass is removed or some area is removed, then how do you find out the center of mass of the remaining object? So students, let us say M1 be the initial mass, M2 be the removed mass. Agreed? So now if in case if I happen to go for my XCM for such a body, then what exactly will be? The formula will be, students, M1x1 minus M2x2 upon M1 minus M2. ये तुम्हारा x एक्सिस के हिसाब से, क्योंकि ये एक रिजिड लैमिना है स्टूडेंट्स, तो इसके x कोऑर्डिनेट भी होंगे, उसके y कोऑर्डिनेट भी होंगे. अगर मैंने पूछा व्हाट एग्जैक्टली YCOM होगा, इट विल बी M1 y1 minus M2 y2 upon M1 minus M2. ये किसके लिए स्टूडेंट्स? अगर मेरे को रिजिड लैमिना दिया है which is a two dimensional object यानी क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट इज प्लेन along xy प्लेन. सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को xy प्लेन में रखा हुआ है, अगर कुछ मास को मैंने अंदर से निकाल दिया, कुछ मास को मैंने, तो पहला पूरे मास m1 मैंने लिया है, तो उसका मैंने पोजीशन निकाला x1 y1, sorry, I've gone with respect to m1, उसका x1 y1 निकालूंगा, फिर पार्ट जो निकालूंगा उसका x2 y2. How do you find out XCOM and YCOM? What exactly are COM for such a body? Of course, it's XCOM, comma YCOM. This is when you remove mass. लेकिन suppose अगर मैं area निकालता हूँ students, then what exactly is center of mass with respect to area? So let us say A1, students, A1 be the original area. A1 be the original area of what? Of the two-dimensional object. इसके बाद में तुरंत problems कर रहा हूँ students. Let A1 be the original area of the two-dimensional object. A2 be the area removed. तो मुझे बताओ XCOM क्या होगा? Sir, it's A1 x1 minus A2 x2 upon what? A1 minus A2. What is YCOM? Then in that case, what exactly will get it will be? Sir, it's A1 y1 minus A2 y2 upon A1 minus A2. What exactly RCOM for such an object we consider is? It's simply XCOM comma YCOM. Yani students, we can find out the center of mass of a two-dimensional rigid lamina either by using mass concept or area concept. That was one part. लेकिन अगर मैंने टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिया और उसमें से कुछ मैंने मास निकाल दिया है या कुछ एरिया मैंने सबट्रैक्ट कर दिया है, क्योंकि वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड होता है. अगर तुम्हें एरिया के हिसाब से दिया है तो गो फॉर एरिया पार्ट ऑफ इट, यू आर रिमूविंग सर्टेन एरिया. अगर सम मास हैज बीन रिमूव्ड देन यू ट्राई टू रिमूव अ सर्टेन मास. Then in that case, how do you find out RCOM? So find out XCOM and YCOM, where M1 and M2 is the initial mass and M2 is a removed mass. A1 is the original area, A2 is a removed area we consider. And that's how we can get your XCM and YCM. Are these two formulas clear to all of you? Yes, sir. Yes. इसी के related मैं problems दे रहा हूँ. इसी के related I'm giving you problems. Because see, the previous जो था, ध्यान से सुना, इसके previous वाला जो mathematical जो बहुत easy था students. If in case if I want to find out center of mass for the entire system, one can easily find out. लेकिन अगर मैं कुछ area निकाल दो, कुछ मानता हूँ, how do you go about with this? Shall I put forward now questions onto the students? Yes, इसको erase कर दूँ? इसको erase कर दूँ अभी मैं? So one. Yes, sir. Done.
Okay, let me go for first a question में previous वाले के लिए देता हूँ, and then I'll go for the removing part of it, students. Listen carefully. ये जो question है students, I'm trying to remove it and place it also. Okay, I'm removing it and then placing it in that case. Okay. Students, the question is, students, listen carefully. A square of side 4 centimeter, I'm giving it to you. This is O. This is D. This is C. This is C complement. This is B. Students, this is from your module only, an unsolved question. Huh? B complement. A complement. Okay, and this is point. B dash. A, B dash. B dash, B. Is removed. Space over. Okay. Students, listen carefully. Okay. A square of side 4, give it to you, a square of side 4 centimeter, and it's of uniform thickness. Square side 4 centimeter, uniform thickness. This is given to you, students, and it's divided into 4 squares. Okay, so there are 4 squares divided into 4 squares. Each of mass. Okay, each have same mass, students. Each have same mass, students. The square portion, one of the square portion is removed and it's placed over the portion of the other one. I want to find out the new position of center of mass. Now, what exactly, students? I'm trying to remove this particular portion. Which part of the portion? I'm removing D dash, A dash, A, B dash, and this part is placed over C dash, D dash, B dash, and B. तो समझ में आ रहा है? Yes. Okay, square is there, side 4 centimeter, uniform thickness divided into 4 squares of equal mass. Of what? All of them are of equal masses. Okay. मैंने क्या किया? ये जो portion है ना, ये जो square, इसको निकाल के इसके उसके ऊपर ओवरलैप किया है. क्वेश्चन अभी क्या है? Friends, what is the new position of center of mass? What is the new position of center of mass? Options are all in centimeter, students. 2,2, 2,3, 2,2.5, and 3,3. All are in centimeter. Students, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? So is this a question clear? First of all, Yes. again, I'm giving the students, I've given you a square lamina. Square lamina of side 4 centimeters given you thickness uniform है और वो कौन से plane में रखा हुआ है? XY plane में रखा है. And is it a 2-dimensional rigid lamina? Yes, it's a 2-dimensional rigid lamina. This is Y and X. Is this square lamina? I've divided into 4 equal squares. Yes, 4 equal squares, each of mass M. और मैंने क्या किया? मैंने ये वाला है. Suppose now if I try to go for it. Suppose if I consider this is 1. This is the first block. Let me take this as first block. इसको मैं लेता हूँ second block. इसको मैं लेता हूँ third block. इसको मैं लेता हूँ fourth block.
थर्ड वाले को निकाल के मैंने फोर्थ के ऊपर ओवरलैप कर दिया स्टूडेंट्स। थर्ड वाले को निकाल के, यानी पहले थर्ड यहाँ पे था, फिर इसको ओवरलैप करके वहां पे ले लिया। तो नाउ व्हाट इज द न्यू सेंटर ऑफ मास? पूछा है न्यू पोजीशन। हाँ, गेट मी द आंसर। This is not, is this, now please tell me, is it a question based on to removing the mass, or is it a question on to finding out the center of mass of a totally new object? New object. The center of mass of new object. वेरी गुड। सबसे पहले ये समझना है, यानी अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊं रफ में, तो इसका डायग्राम कैसा होगा? तो मतलब सर अभी 4 ब्लॉक की जगह पे कहने से आपको शो ओनली 3 ब्लॉक्स आया ना? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. यानी ये 2 है, ये 1 है, सिर्फ हुआ क्या है, 3 और 4 ओवरलैप हो चुके हैं। अभी समझ में आया? हाँ, क्लियर? Yes, sir. Yes. Now what did I made you understand? The concept before removing masses and उसके पहले वाला जो concept बताया था उसके related है। Hope you remember. Come on, Aditi, Chanani, or Doing Thui. so. South, answer the Fatak se answer the South. Before all these girls answering, I want you to answer fast. South सुन रहा है कि सो गया है? Yes, sir. I'm trying. I'm doing this. हाँ, मुझे सबसे पहला आंसर चाहिए तेरा। Vidhi Parmar, Vidhi Paul, you all are visitors, Vidhi. So answer fast. Adarshini, Tisha, Swati, you all also visitors. Please answer as fast as possible. Options are given to you as 2, 2, 2, 3, 2, 2.5, and 3, 3. All are in centimeters. Each block is of mass m, students. All of them are equal masses. 4 squares inside it. All of them are same mass. Okay, Sneha has got the answer. Sanjana also has got the answer. Very good. Both of them are absolutely correct. Come on, Parthvi. Come on, Om. Soumya. Vidhi. Aditi. Suhani. Jana.
Udit. Absolutely correct, Yana. Okay, students, shall we discuss? Students, shall we discuss? Swani, shall we discuss? Yes. Okay, Yana, come on, answer, Yana. क्या किया तुमने? Sir, I found the center of mass of all those 3 blocks. Okay, so now if I say first, second, third, and fourth are overlap, तो ये इसका center of mass, ये इसका center of mass, और ये इसका center of mass. So did you find out R1, R2, and R3? Yes. Very good. The students first वाले के लिए, what is X1, Y1? First block लिए X1, Y1 कितना है? ये कितना दिया तुम्हें 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 1, और ये कितना होगा 3, है ना? Yes, sir. So can I say X1, Y1 for the first block कितना होगा? Yana, tell me fast. 1,3. 1,3. Second block के लिए what exactly it will be? X2, Y2 क्या होगा? 1,1. 1,1. And third and fourth block के लिए क्या होगा? X3, Y3? 3,3. Okay, 3,3. Now, if I happen to consider, I want to find out what center of mass of all the 3 we consider. So now if I say RCOM, so can I say what's the formula for RCOM? XCOM plus YCOM. Okay, that is we consider as XCOM, comma YCOM, or I can simply run M1. देखो ये 2 तरीके से हो सकता है students. कोई R1 डाल के ले सकता है, वो भी हो सकता है students. I can also run this way. RCOM can be written as what? M1 R1 plus M2 R2 plus what exactly it will be? M3 R3 upon M1 plus M2 plus M3 हो गया तुम्हारा. और ये R1 क्या है तुम्हारा? R1 bar will be what? X1 है, ये I cap होगा, ये J, ये I, ये J, ये I और ये J. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. sir. तो तुम ये भी ले सकते हो, या तुम XCOM YCOM सेपरेटली निकाल सकते हो, doesn't matter. Now can you get the answer for XCOM? XCOM is 2. Okay, how do you get it? What's the formula? M1 X1 plus Plus M2 M2 X2 plus M3 X3 upon sum of all masses. Okay, M1 plus M2 plus M3. अभी मुझे बताओ, ये X1 X2 X3, मुझे बताओ M3 क्या कर रहे हो तुम? What exactly M3 will be taking it? M3 we will have 2M. Mass will be 2M. Absolutely correct, students. यहाँ पे सब students गड़बड़ करते होंगे, जिनको नहीं मिल रहा है ना students ध्यान से सुनना. XUM क्या आ रहा है? सर XUM अगर मैं निकालूंगा तो देखो M1 is M. What is X1? It's 1. M2 is this is M. What is X2? Is also 1. But for the third one there are 2 masses. तो students ये 2M होगा. ये M है, ये M है, ये 2M होगा. तो यहाँ पे क्या होगा? 2M होगा. And what exactly X3 is 3 upon 2 plus 3 plus 4 डिनोमिनेटर में 4M होगा. क्या ये क्लियर हुआ? देखो 3 2s are 6, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, 8 by 4. What is my answer? 2. What about YCM? YCM तुम सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा? 2.5. 2.5. साउथ क्या ये क्लियर हुआ? साउथ साउथ आर यू देयर? Yes, sir. YCM का कैसे Yes, sir. निकालेगा बताओ? YCM कैसे निकालेगा बताओ? So we will Formula. use this formula M1 Y1 plus Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 upon M1 plus M2 plus M3. Okay, what is M1? How much is M1? M1 Sir, is it is only M. M2 is also, M. and the last one is how much? Sir, it will be 2M because we Very have good. overplaced. Very good. Overlap. What is Y1 for the first one? Sir, it's 3. Y2 It's 1. and Y3 will be again 3. 3. Can you Yeah. get it?
I can get my answer in unit vector form also. Students, क्या ये Yes, clear sir. हुआ? Okay. समझ में आ रहा है ना students? Yes. Okay. Can I erase this, students? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ? So The here answer is can option be C, right? Pardon? Option C is the correct answer, right? Of course, C is the correct answer. 2,2.5. Yes, sir. No, sir, even I sent you the answer, but you didn't respond, so I thought it was wrong. Oh, who's this? Aditi, I didn't see your answer. You posted your answer. Yes, sir. Hey, Bhagwan. Aditi has got angry onto me. Hey, Bhagwan. कितने जन को खुश करना. Sanjana, समझ रही है ना Sanjana? See what is my हालत? Have pity onto me, please. Yes, sir. Okay, fine. It's good. Suhani, what about you, Suhani? You didn't answer, Suhani. no, sir. I have a doubt that here can we use area formula? Which one? Here that area or thing you told now about. So you want to go for with respect to area? Yes, sir. Why you want to Can go we with use respect to? that also here? So with respect to area, are you getting the coordinates 2,2.5? No, sir. That only I had a doubt. Yes, sir. मिल रहा है area से कि नहीं मिल रहा है? Sir, I area and I'm getting the same answer. Okay, and what's the formula you used it, Sanjana? यहाँ पे addition होगा. Sanjana, what's the formula you used it? Sir, I used a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 is equal upon a1 plus a2 plus a3. Absolutely correct. और यहाँ पे area कितना होगा? What is the area of the first block I'm concerned with it is? So 4 into 1. That means Yeah. 4. Because see the side is 4 centimeters, so 2 centimeters. The area of the first lamina will be 2 square 4, and this will be how much? 8. Yes. Will it be 8 or it will be only 4? Sanjana? So you are asking about the which? Area part. If I try to overlap this onto this, okay, what about the area? Will the area will be doubled? No, sir, the area would remain same. Will remain same. Mass will be doubled. Got it? यहाँ पे स्टूडेंट्स जब भी Yes. तुम ये जो मैंने एरिया और मास का दिया है स्टूडेंट्स, दैट इज इन ऑर्डर टू रिमूव द पार्ट ऑफ इट. If in case if I now try to give you a question where I'm trying to remove it, then you can get an answer accordingly. Now suppose अगर मैंने यही question, students, everybody think carefully, same question, students, find out the center of mass if the fourth block is now removed. So literally, how do you go about with this? Sir, it is removed and placed over, right? No, not placed. I'm just removing the third. First, it was a square lamina. Side is 4 centimeter. Students, side is 4 centimeter. Agreed? Listen carefully, students. क्या मैं इसको erase कर दूं अभी? ये erase कर दूं? Yes, sir. Okay, now please pay attention, students. Okay? I'm changing the question. Now it was a square lamina, students. The side was 4 centimeter. Okay, now I'm removing one of the block into it. Students, one of the square lamina, I'm removing it. Now there are only 3 squares. Find out the center of mass of such a geometrical shape. This is 4 centimeter. This is also 4 centimeter. This part is removed now. पहले पूरा चार्ट है, अभी मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ. इसको मैंने रिमूव कर दिया.
निकाल ही दिया. What is the new center of mass? Students, do you know the formula? Students, do you know the formula? If I remove the matter, कुछ याद आ रहा है? कौन सा formula I gave it to you? XCOM, YCOM. What's the formula? M1 Originally, x1 minus M2 x2. why are you going for mass in this case? I've given you sides now. So go for sides. Go for area. Why are you going for mass? ये भी select करो students. एरिया दिया या साइड दिया है, साइड के हिसाब से ले तो साइड के हिसाब से ले लो. तो देखो a1 x1 minus a2 अपॉन a1 plus a2. a1 minus a2. मैंने क्या बोला था? a1 क्या है? ओरिजिनल एरिया. a2 क्या है? रिमूव्ड पार्ट. समझ में आ रहा है? हाँ स्टूडेंट्स. Yes, sir. Yes. YCM क्या होगा? a1 y1 minus a2 y2 upon a1 minus a2. Now ध्यान से सुन everybody, I'm solving this question students. अगर जब भी तुम ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो ये सोचो कि पूरा एक स्क्वायर लैमिना है. प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. अगर ये स्क्वायर लैमिना था जिसका साइड 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है, तो उसका सेंटर ऑफ मास विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स. हाँ स्टूडेंट्स, पहले केस में स्टूडेंट्स. Yes, sir. तो मुझे बताओ इसका a1 क्या होगा? व्हाट इज a1? तो बोले सर 4 स्क्वायर विल बी हाउ मच? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. एग्रीड? Yes. What exactly its coordinates? What exactly the coordinates of center of mass for a1? ये कितना? ये 4 सेंटीमीटर है. This is 2,2. तो समझ में आ रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, आया ना? Yes. अभी मैंने क्या किया है? ध्यान से देखना. वही स्क्वायर लैमिना, लेकिन अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने कट कर दिया. तो कट पार्ट को मत लो. सॉरी, now I'll show only the cut part. चलो, now only showing the cut part. ये कट पार्ट यहाँ पे आ गया. ये तुम्हारा फोर्थ ब्लॉक था जो कट पार्ट था. हाँ स्टूडेंट्स, Yes. उसका एरिया क्या है? what exactly the center of mass of this cut part? ये देखो, ये कट पार्ट है ना फ्रेंड्स, ये कट पार्ट है ना. तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? यानी a2 क्या होगा? व्हाट इज a2? हाउ मच इज a2? व्हाट इज द साइड? 2 स्क्वायर. तो कहना से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. एग्रीड? इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. कट पार्ट का रिमूव ना. Yes. तो ये वाला a2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? Yes. ध्यान से सुनना. टोटल इज 4 सेंटीमीटर. This much is 2 centimeter. It's a square block. What is area of the square? Side square, 4 centimeter square. Students, what are the coordinates of center of mass for this? 3,3. तो ये क्या है सर? ये है 3, क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट. Yes. Now can you find out XCOM and YCOM and get the answer? Yes, sir. स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसमें से मैंने ये लिखा है. तो now can you get XCOM and YCOM? चलो, get the answer for XCOM. What exactly XCOM क्या होगा? Solve XCOM. How much is A1? So A1 is 16 into X1 is how much? 2 minus A2 is how much? 4. Are you getting it? Into X2 is how much? 3. So A1 X1 and A2 X2 we consider upon 16 minus 4. तो इसका आंसर कितना होगा? Sir, it's 32 minus 12 upon 12. Agreed? So what exactly this will be? 0, 20 by 12, 2, 4 5s are and 4 3s are. So can I say my answer is 5 by 3? Is this clear? Yes. Yes. Yes, sir. Now can I get YCOM? YCOM is what? A1 Y1, A1 Y1, 16 into 2 minus A2 Y2.
Upon what exactly I'm getting it? Same answer I'm getting it. E1 minus E2. So इसका भी आंसर क्या होगा? 5/3. So what exactly the center of mass of the remaining portion? Center of mass of this remaining portion, 5/3, 5/3. Students? Students, क्या ये clear हुआ? हाँ sir. Yes, sir. How much is 5/3? How much is 5/3? Approximately 1.66. 1.66. ये भी 1.66. Agreed. Now please pay attention, students. अगर तुम इसको निकाल दो, मुझे बताओ इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ पे आएगा? हाँ स्टूडेंट्स? Yes. इसका ये ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है. हाँ स्टूडेंट्स? Yes. Now if you try to locate the center of mass, where exactly I can get it? Where exactly I can get it? ये 4 centimeter यानी ये 2 centimeter है students. My center of mass will be somewhere in between these two masses. ये देखो ना, ये ब्लॉक का मैंने सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लिया है, ये दोनों ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ पे लिया है. तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में भी निकालता हूँ तो ये मेरा 1 पॉइंट है, ये 1.67 यानी 1.7 यहाँ पे आ रहा है, 1 point somewhere over here I'm getting it. And is this the heavier mass? Are these two masses Yes, sir. together becomes a heavier mass? So can I say my center of mass will shift in that direction? Friends, Yes. are you getting it? तो समझ में आ रहा है? तो 5/3, 5/3, that's the location of the center of mass. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes, sir. वापस मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. पूरा एक स्क्वायर लैमिना था जिसका साइड 4 सेंटीमीटर्स था. आई गेटिंग इट स्टूडेंट्स? और मैंने साइड्स के हिसाब से, देयरफॉर आई एम गोइंग विद रिस्पेक्ट टू एरिया. नाउ इफ इन केस इफ यू लुक ओवर हियर, मैंने ये जो फोर्थ वाला ब्लॉक उसको मैंने निकाल दिया है. तो नाउ अगर मैंने पूछा व्हाट इज द रिमेनिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, तो लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ द एंटायर ब्लॉक. इट वाज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. कट पार्ट का क्या होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. एग्रीड. What exactly the center of mass of the entire body without removing it? तो उसका center of mass क्या था? 2,2 आएगा मेरा. A2 का center of mass क्या है? सर ये जो कट पार्ट है उसका center of mass क्या होगा? 3,3 आएगा. Formula, if I happen to go for XCM and YCM, formula is A1 x1 minus A2 x2 upon A1 minus A2. I'm going to get. अगर यही क्वेश्चन मैंने मास के हिसाब से दिया था और साइड्स के हिसाब से आया, if in case if I consider, then certainly अगर मैंने मास को इंट्रोड्यूस कर दिया तो I would have got in terms of mass. Is this clear, students? Yes, sir. Can I erase this? Sir, Yeah. sir, in that the previous question, where you removed the mass and overlapped it. So in that, when we use that area formula, so with can you do that and show? Because I'm not getting that answer with the area formula. Area, what did you pick up? Area, what did you pick up? Because that will not go with area part of it, because we need to go with respect to sides we considered. हम लोग ने sides लिया था ना? What exactly we picked up? Then the first part, उसके पहले जो आपने क्वेश्चन दिया था. हाँ, तो उसका जो ओवरलैप किया था उसका एरिया कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया था, या उसका 8 सेंटीमीटर लिया है? नहीं सर, 4 लिया तो नहीं आ रहा है.
Students, very sorry, it was from Mira Road branch. Sir, you have class tomorrow, Mira. Yeah, that's what they're saying it. You get the just now Anuma only was taller, that's how to receive it. Okay, Suhani, what you were saying है क्या बोल रहे थे तुम इसको overlap करते हैं हाँ that's what Yes, sir. So how to Okay. find the answer with that area formula? एरिया फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे ये तुम्हारा एक आया और ये तुम्हारा मास आ गया ना दैट इज व्हाट तो अगर तुम लेते हो तो ये तुम्हारा इफ इन केस इफ आई हैव टू कंसीडर विद दिस पार्ट ऑफ इट तो एरिया के हिसाब से तो आएगा नहीं बिकॉज ये ओवरलैपिंग माय डियर ये हाँ, मास के sir. हिसाब से होगा एरिया के अंदर तेरा हमारा ओवरलैपिंग के लिए नहीं आएगा बिकॉज एरिया अगर मैं ओवरलैप करता हूँ तो दिस विल बी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली Yes. because the thickness is negligible but it will be 4 centimeters I will not go for area because यहाँ पे overlapping है कट पार्ट होगा या ऐड होगा तो एरिया तुम कर सकते हो लेकिन वो Sir, एडिशन अगर- के लिए ओवरलैप होगा तो नहीं ये पॉसिबल होगा सर अगर दिया होता कि चारों स्क्वायर्स के मास डिफरेंट है तो हाँ तो इट्स पॉसिबल तो इट्स तभी तो पॉसिबल एरिया तो सेम ही होता ना लेकिन एरिया सेम होगा तो मास के हिसाब से जाना पड़ेगा हमें अगर मैं देखूंगा कि अगर एक एरिया का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेकिन एक का मास 5 किलोग्राम है दूसरा मैंने 10 किलोग्राम लिया और मैंने ओवरलैप कर लिया तो इट हैज टू गो विद मास नॉट विद एरिया देन गेटिंग इट यस Now, students, one more question, students. Listen carefully for this one. Now, suppose if in case if I give you a circular lamina, students, एक circular plate में दे रहा हूँ, okay? Question is, students, find the position of center of mass, okay, of a uniform lamina. Now, the lamina is actually what it is. It's a kind of a circular one. Listen carefully. These are the axes. I'm giving it to you. Here is center. Since I wanted to find out the center of mass of a uniform lamina, radius is given to you as A units. Okay. Radius is given to you as A units. We consider this is the X and this is the Y axis, students. मुझे पूछिए students center of mass. ध्यान से सुनना center of mass of remaining laminar part if a circular part is removed from it. Hope the question is clear, students. Find the position of center of mass of a uniform lamina circular plate of radius A where some part has been removed. Some part has been removed. Now, when I say about removed, that means if I take this as O, if I take this as P, if I take this as Q, I'll take this as S. ये भी तुम्हारा radius है और ये भी तुम्हारा radius है. Are you getting it? So I wanted to find out, students, ये part, center of mass of this shaded portion. क्या ये question clear हुआ सबको? Yes, sir. So get me the answer now. And get me, I'm not giving you options, students. Get me the answer correct. Yana, are you there, Yana? Yes, sir. Get it correct. And South, get it correct.
I've just given you one information that the radius of the circular plate is A units. And a small spherical part has been removed from it. Circular part is removed. Find out center of mass of the remaining portion, or the shaded portion. The most intelligent person of the class will be answering students. Let's see who's the one. But Swati is there, Tisha is also there. Oh, Swani has answered. Yana, Sanjana, Swani has answered. Sneha. Oh, it's wrong. Swani, it's wrong. गाय किया तूने, बहुत गाय किया. Position of center of mass of a uniform lamina. Lamina, the word lamina stands for two-dimensional object. XY plane में दिया है. Please, ये 3D object नहीं है. ये फुटबॉल का मैंने नहीं पता. ये 5 रुपए का कॉइन दिखाया मैंने. सबसे पहले उसको समझो. It's not a sphere. It's a simply circular lamina, students. Plate. XY plane में है. Two-dimensional दिया है. Radius is A. Center of mass of the shaded portion. Yana, you're close, but your YCM is correct. XCM is not correct. Shall I solve it, students? So 1 minute, please. No, Suhani. Incorrect, Suhani. Wait a minute. Let me see. No, my dear Yana. Oh, Sanjana is correct. Sanjana, absolutely correct. Students, मुझे ये पता नहीं चल रहा है मैंने क्या बताया. Why do you all stress yourself so much? I told you to find out center of mass of the remaining. अभी ध्यान से सुना, students.
पहले तो पूरा पूरा सर्कुलर 5 रुपए के कॉइन के बारे में देखो. एक प्लेट जैसा है स्टूडेंट्स. इट्स अ 5 रुपए कॉइन. इट्स अ प्लेट. इट्स नॉट अ स्फीयर. ओके, इट्स अ लैमिना. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर मुझे उसका सेंटर ऑफ मास के हिसाब से लेना है तो आई नीड टू गो फॉर सर्टेन कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो व्हाट डू आई डू टू मेक माय प्रॉब्लम मोर इजियर स्टूडेंट्स? मैंने जो हेवियर पार्ट है उसको मैंने क्या कहता है, ये मेरा एक्सिस मैंने ले लिया स्टूडेंट्स. ये और ये मैंने एक्सिस ले लिया. तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा लैमिना था ना, उसके जो मेरे कोऑर्डिनेट्स थे xy y1, वो मैं लूंगा 0,0. x1 y1 को मैंने क्या ले लिया है 0,0. a1 क्या है? व्हाट इज द ओरिजिनल एरिया? सर रेडियस इज a. इज इट अ 5 रुपी कॉइन? यस. व्हाट्स द फॉर्मूला? पाई r स्क्वायर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? और इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो. सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेंटर ना, है ना. अभी इसमें से मैंने एक सर्कल निकाला है, इसमें से मैंने एक सर्कल निकाला है. तो व्हाट एग्जैक्टली द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट? So area of the cut part. A2 is the area of the cut part. What is the radius? What is the radius of the cut part? So the radius of the cut part is a by 2. देखो ना स्टूडेंट्स, ये पूरा a है स्टूडेंट्स, ये पूरा a है. तो ये a by 2 होगा, ये भी a by 2 होगा. तो कहने से पाई a स्क्वायर पाई r स्क्वायर. क्या ये क्लियर हुआ कट पार्ट का? अभी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? व्हाट एग्जैक्टली x2 y2 स्टूडेंट्स? What is x2 y2? I'll consider. If I happen to put this as my coordinate system, what exactly sir? ये इसका center of mass, cut part का ये center of mass होगा, है ना. तो उसका what exactly coordinates will be from here? So this will be a by 2, यानी x coordinate is a by 2, y coordinate is 0. क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स सबको? हाँ स्टूडेंट्स, ये पार्ट क्लियर हुआ या ना? Yes, sir. I have. तो देखो, यानी तुमने गलती कहाँ पे किया होगा मालूम है? Many students must have not taken the coordinates properly. एरिया सबको पता था. एरिया ये क्या था? पाई a स्क्वायर. कट पार्ट का एरिया क्या था? पाई a by 2 the whole square. फॉर्मूला सबको पता था स्टूडेंट्स. व्हाट एक्चुअली फॉर्मूला? तुम्हें XCOM YCOM यानी RCOM निकालना है, तो XCOM का फॉर्मूला तो सबको पता था. व्हाट एक्चुअली इट विल बी? सर इट्स a1 x1 minus a2 x2 अपॉन a1 minus a2. सर एरिया निकालना है ना, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला सबको पता था. ये YCOM, everybody knew that formula. What exactly will be? a1 y1 minus a2 y2 upon a1 minus a2. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, अभी तुम्हें करना क्या था? तुम्हें कोऑर्डिनेट्स निकालना था. तो पहला पूरा जो स्फीयर था, एक लैमिना था, उसका सेंटर ऑफ मास क्या था? 0,0 था. उसमें से जो मैंने स्फीयर निकाल दिया, उसका सेंटर ऑफ मास क्या था? उसका सेंटर ऑफ मास आई एम कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो ये देखो, ये पूरा एंटायर मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट में अज्यूम कर रहा हूँ. तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर a by 2, 0. Now can I substitute the values? So what exactly it will be? Sir, a1 will be equal to what? Pi a square into x1 will be 0 minus a2 will be equal to what? Pi a square by 4 into x2 will be equal to how much? A by 2 upon pi a square minus pi a square by 4. Y coordinate तो 0 ही आएगा. कैसे? सर a1 है pi a square. What is y1? 0 minus a2 क्या है? Pi a square by 4. What is y2? Y2 is also 0. So see, YCOM is 0. Pi a square minus pi a square by 4. And students, if I happen to go for RCOM, which is XCOM comma YCOM, my YCOM is 0. What is my XCOM? जब मैं इसको solve करूँगा students, my answer will be what Sanjana has got it, minus a by 6. Is this clear to all of you all? Friends, is it clear to all of you all? Yes, sir. Students, was it tough? Students, मुझे बताओ, क्या ये tough लग रहा था? हाँ जनानी, was it tough? जनानी, चन्नानी, चन्नानी. Sorry, literally Yes, sorry. sir. Yes, sir. No, It's my mic is not sleeping. turning No. on. No, नहीं, चिल्लाया तो मम्मा ने बोला जा भाग, वो चिल्ला रहा है. जा भाग, भाग, वो No, चिल्ला sir. रहा है. Yes.
तो समझ में आया जनानी? Did you get it? Sir, actually, I made a mistake. So, like, I got a wrong answer. Okay, doesn't matter. But now have you understood? Yes, sir. Suhani, is it clear? Yes, sir. Yana? Yes, sir. Okay, Parthi, what about you? Soumya? Adarshini? Yes, Khyati? sir. Okay. Khyati, what about you, Khyati? Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine. Fine. Friends, next lecture will be continuing further ahead. Okay, now we'll go for velocity of center of mass, acceleration, and momentum. And then we'll go for law of conservation of linear momentum. Okay. So we'll wind up the sessions. Okay, friends. Next lecture will be continuing further. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Most welcome.